Hello class, welcome back to your math classes and yeah. So class, what happened that हमने मनी चैप्टर तो कई बार पढ़ लिया, but still during the online class what I found that some of you still ask me कि मैम इस क्वेश्चन में क्या करना है, whether we have to add or minus or multiply or subtract. Today only I have given some question and then some of you are asking कि मैम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. Oh God, seriously? So now kids, what I'm going to do in today's class, I'm going to include all four operations of money, that is addition, subtraction, multiplication and division. All four operation, and then we will discuss all four word problem based on all these questions. So I will write the question on the board and then I will explain you word by word. Okay. Now, so I will start with some very general questions. So today's class I am going to start with very general question. Okay. So answer me for this question. How many 25 पैसा coin में 1 rupee? So the question is how many 25 पैसे coin will make 1 rupee? 25 पैसे के कितने कॉइन हम अगर लेंगे तो 1 रुपीस हम बना लेंगे. So this is, see, one thing I would like to clear here, that this will be probably our last class for money, and from the next class I'll try to start new chapter. So be very attentive. Okay. So now the question is कि how many 25 पैसे coin will make 1 rupees? 25 पैसे के कितने coin 1 rupees बनाएंगे? Now how we gonna do this? 25 पैसे कि कितने coin? Now you tell me कि 25 पैसे. अच्छा, first of all tell me 50 पैसे के कितने coin 1 rupees बनाएंगे? कितने 50 पैसा कितने बार ऐड करें कि 1 rupees आए? Tell me. See. 50 पैसा हम कितनी बार ऐड करें कि हमारा आंसर 1 रुपीस आए? पहले आप ये बताओ, फिर हम 25 पैसा वाला क्वेश्चन करेंगे. आंसर में कितने 50 पैसे चाहिए? मैम ने तो वैसे भी ड्रॉ कर दिया. 2. वी नीड 2 50 पैसा कॉइन. So we need 2 50 paisa coin to make 1 rupee. Okay. Now the question arises, how many 25 paisa coin will we need to make 1 rupees? So we need 4 25 paisa coin. How? 25 paise multiply by 4. 5 4s are 20, carry 2. 4 2s are 8 to 10. 100 and 100 paise makes 1 rupee. 100 paise makes 1 rupee. So how many 25 paisa coin you will need to make 1 rupees? You will need 4 25 paise coin to make 1 rupee. Okay, so here we have seen that 25 paise coin के 4 25 paisa coin if we will take, so that will make 1 rupee. Okay, now my next question is, next question that I am going to take is, how many 200 rupee notes will make 1000? Will make 1000. How many 200 rupee note will make
1000। अब क्वेश्चन क्या है कि 200 रुपीज के कितने नोट 1000 बनाएंगे, ठीक है। तो 1000, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1000 में कितने जीरो। मैम ने तो ऑल दो बोर्ड पे लिखा है बट स्टिल 1000 इक्वल्स टू हाउ मेनी जीरो, 3. So how many, so our question is how many 200 rupee note will make 1000. चलो आंसर करो, मैम इज वेटिंग फॉर योर आंसर, ट्राई टू आंसर. Okay, so our question is कि how many 200 rupees note will make 1000. Tell me. So क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को अलग तरीके से देखते हैं कि 200 नोट को कितने 200 नोट हमारे पास होंगे, तो हमारे पास 1000 हो जाएगा. अच्छा चलो ये बताओ 2 रुपीज के कितने कॉइन्स आप ऐड करोगे तो आपके पास 10 रुपीज बन जाएंगे. 2 रुपीज के कितने कॉइन्स इज इक्वल टू 10 रुपीज. 2 रुपीज कितनी बार हम ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 10 रुपीज 5 टाइम्स. वाई 5 2 10. तो 2 रुपीज वी विल ऐड 5 टाइम्स. Okay. Similarly, if we have to make 1000 with the help of 200 rupee note, so we have to add 200 rupee 5 times. Okay, let us see. First note, second note, third note, fourth note, and this is my fifth note, and this will equals to rupees 1000. Okay, 200, 200, 200, 200, 200. 200 plus 200 5 times. If we do it 5 times, we will get 1000. ठीक है, we will get 1000. How? चलो करके देखते हैं. तो here we are having rupees 200, and if we will multiply it with 5, how much we will get? Multiply and tell me the answer. Multiply 200 with 5 and then tell me the answer. चलो करो. How much? Yeah, 1000. So 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, and 5 twos are 10. So 1000. So that means 200 rupee note we will add 5 times to get 1000. Yeah, correct. चलो थोड़े और हम लोग रिच की बात करते हैं, और रिच हो जाते हैं, थोड़े से और रिच. So next question is how many 500 rupee note you will need to make 1000. How many 500 rupee note you will need to make 1000? Now this time also you have to make 1000 only. This time also you have to make 1000 only, but the only difference is that you have to make 1000 using 500 rupee note. You have to make 1000 using 500 rupee note only. Let us see कि भाई 500 के कितने नोट हमें चाहिए 1000 बनाने के लिए. चलो आंसर करो. हाउ मेनी 500 rupee note you will need to make 1000? अच्छा, to make this question more simpler, tell me how many 5 rupee coin you will need to make 10 rupees. 10 rupees बनाने के लिए सपोज आपके पास कितने 5 rupees होंगे, तो आप बोलोगे कि आई एम हैविंग 10 rupees. कितने 5 rupees will be equals to 10 rupees?
how many 5 rupee will make 10 rupee? How many 5 rupees coin you will need to make 10 rupee? Tell me. See, here I am having 2 5 rupee coin. See, here I am having 2 5 rupee coin, and this 2 5 rupees coin is equals to 1 10 rupees. This 2 5 rupee coin is equals to 1 10 rupees. है ना? Okay. That means you will need 2 5 rupee coin to make 1 10 rupee. Okay? Sound similar? Now, our question. How many 500 rupee note you will need to make 1000? So, here I am having some 500 rupees note. Now, my question is how many 500 rupee note you will need to make 1000? Tell me. इनमें से मैम कितने नोट हटाएं तो वो 500? मैम इनमें से कितने नोट यूज करें 1000 के लिए? टेल मी. सी, अगर मैम इसको काउंट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट कितना है? 1 2 3 4. So do we need 4 500 note to make 1000? No. Do we need 3 500 rupee note to make 1000? Still no. But we need 2 500 rupee note to make 1000. See, 500, 2 500 note is equals to 1000. Sure. So, 2 500 rupee note. So, I am going to draw 500 rupee note. 2 500 rupee note. And this will equals to 1000. Okay. This will be equals to 1000 rupee note. Now, my next question is, how many 500 rupee note will make 2000? Now, next question is, how many 500 rupee note will make 2000? Tell me. So, my question is, how many 500 note will make 2000? A difficult question, but we will find out the answer. Come on. So what we need, हमें क्या पता करना है कि भाई कितने 500 के नोट होने चाहिए टू मेक 2000. अब हमें बताना है कि 2000 रुपीज बनाने के लिए कितने 500 के नोट्स होने चाहिए. कैसे बताएंगे? लेट अस सी. So kids, question is, how many 500 rupee note you will need to make 1000? Okay? Tell me the answer. Come on. Come on, tell me the answer, kids. How many 500 rupee note you will need to make 1000? Yeah. So, according to my calculation, we will need 4 500 note to make 1000 note. 1 2000 note. 4 500 note is equal to 1 2000 rupee note. Let us see how. Let us see. Hello. So here I am having
2000 नोट, और मैम ने बोला कि भाई वी विल नीड 4 500 नोट. 500 plus 500 plus 500 and plus rupees 500. Now let us do a rough work here. So rupees 500 multiply with 4. 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 5 fours are 20. 2000. That means if we multiply 500 with 4, that means अगर 500 के 4 notes हम लेते हैं तो that will be equals to 2000. That will be equals to 2000. Isn't it? Okay. So this तो we have clear कि कितने रुपए के कितने नोट मेक्स कितने पैसे, इतना तो हमने क्लियर कर लिया है ना. ये तो हमें आ गया. नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आई हैव टोल्ड यू दैट टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक ऑपरेशन. तो ये समझना वाज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंक्लूड ऑल दोज क्वेश्चन व्हिच यू गाइस आर डूइंग रॉन्ग. I'll start with, okay, one of my favorite question. Okay, so I'm going to start with one of my favorite question, and that question is, a pencil cost rupees 8.30 and an eraser costs rupees 3.75. Which cost more and by how much? So the question is, which cost more and by how much? Now the question is, a pencil cost rupees 8.30. Our question is that a pencil cost 8.30 and an eraser cost 3.75. Now which cost more and by how much? So kids, tell me a thing. I don't know whether these two things are relatable or not, but yes, tell me, this chalk, oh, this is not even visible. I'm having two chalk in my hand. Now which chalk is longer? In given two chalk, इन दोनों में कौन सा chalk ज्यादा बड़ा है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? We just visually, हम खाली देख के compare कर रहे हैं. So in this question also, this question says a pencil cost 8.30. The question says कि एक pencil का price is this much and an eraser cost 3.75. Question is which cost more? किसकी price ज़्यादा है and by how much? Which cost more and by how much? Okay. So what we have to do, first we will write the statement. So let us write the statement. Our first statement will be cost of pencil equals to
then cost of eraser equals to cost of pencil is 8.30 and cost of eraser is 3.75. नाउ देखो पहला पूछा विच कॉस्ट मोर, दोनों में से किसकी प्राइस ज्यादा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर, कंपेयर करेंगे, नापेंगे इसको, हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो लेट अस कंपेयर. सो दिस साइड आई एम हैविंग पेंसिल दैट कॉस्ट 8.3, okay let me use this space. This side I am having pencil that cost 8.30 and this side I am having eraser that cost 3.75. किसकी कॉस्ट ज्यादा है? अब आप खुद सोचो, 8 रुपीज इज ग्रेटर और 3 रुपीज इज ग्रेटर, मतलब माई पॉइंट इज कि 8 रुपीज इज ग्रेटर और 3 रुपीज इज ग्रेटर. ऑब्वियसली 8 रुपीज 30 पैसा इज ग्रेटर. So which cost more? Pencil cost more, है ना? So which cost more? Pencil cost more. Now next part of the question is by how much? कितने से, तो हमें ये तो पता चल गया कि pencil cost more. Next part of the question is कितने से, मतलब कितने ज्यादा से. So what we will do? कितने ज्यादा का व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट, क्योंकि पूछा. अब बताओ, खुद बताओ, 5 रुपीज इज ग्रेटर और 3 रुपीज इज ग्रेटर. 5 रुपीज इज ग्रेटर. अब अगर हमसे पूछते कि कितने ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट ना. व्हेन वी विल सबट्रैक्ट 5 में से 3 देन ओनली वी विल गेट 2. तो हमें पता चलेगा कि 5 से 3 से 5 2 ज्यादा है. ओके, नाउ सो हियर वी हैव डन the comparison part, compare कर लिया. now we will subtract. so how we will subtract? write the two heading, rupees का heading and पैसे का heading. write 8.30 then subtract 3.75. चलो subtracted, सब्ट्रैक्ट करी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो आता है बेटा, दिस मच तो यू नो. कम ऑन, डू इट. कंप्लीटेड. डू द सब्ट्रैक्शन. स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस. Start from this place, come on. Okay, let us start subtracting. So we are having 0. So this 0 will take borrow from here and it will become 10. And this number will become 2. Now 10 minus 5 we will get 5. Again here we are having 2. So count after 7 to get 2. 8, 9, 10, 11, 12. We will get 5. अब यहाँ पे 3 भी छोटा था, तो उसने क्या किया? It has taken borrow from here. This number has become 7. Now 7 minus 3 we will get 4. So our answer is 4 rupees 55 paise. Our answer is 4 rupees and 55 paise. That means pencil costs more. Pencil costs more by 4 rupees and 55 पैसे. ओके, तो क्वेश्चन क्या था? तो हमें क्या, अभी आज मुझे एक बच्चे ने इस क्वेश्चन में मल्टी
मल्टीप्लाई करके दिखाया कि मैम सी आई हैव डन द क्वेश्चन एंड व्हाट ही हैज डन द मल्टीप्लिकेशन देयर। बताओ बेटा, क्वेश्चन में अगर है हाउ मच मोर, कितना ज्यादा, कौन बड़ा कौन छोटा, सो व्हाट वी विल डू देयर, वी विल सब्ट्रैक्ट। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज पेंसिल का कॉस्ट इज गिवन, इरेजर का कॉस्ट इज गिवन, टू कॉस्ट हैज बीन गिवन एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। सो व्हाट यू विल डू, हमने क्या किया, सिंपल हमने वहां पे सब्ट्रैक्ट किया। Okay. Now I'm going to erase the board to do the next question. I hope this question is very clear to you all. Okay. Now the next question that I'm going to take is see, next question is Sita had rupees 400. Okay. She spent rupees 254 in buying a table. How much money is left with her? Now this question is very easy. Question says कि Sita had certain amount of rupees, that is she was having 400 rupees, and out of those 400 rupees she has spent rupees, how much? She has spent rupees 254 on buying a table. How much money is left with her? तो भाई जब क्वेश्चन में लेफ्ट आ गया, सो व्हाट यू विल डू, इफ क्वेश्चन में ही लेफ्ट आ गया दैट मीन्स इट इज सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। तो जब क्वेश्चन में ही आपके आ गया है लेफ्ट, मतलब उसके पास कितने पैसे बचे, सो व्हाट यू विल, उसके पास कितने पैसे बचे, सो व्हाट वी विल डू, we will minus. So let us subtract. I'm not going to write the statement this time because you know very well how to write a statement. So rupees 400 means 400 rupees and 00 paisa. Or in this case we can also avoid writing 00 paisa. Now out of this 400 rupees we have to minus rupees 254. Now subtract 10 minus 4, how much you will get, 6, 9 minus 5, 4, 3 minus 2, 1. So total amount left with her after buying table is 146 rupees. 146 rupees is left with her. This was the total amount she had. This is the total amount she spent on buying a table. And this is the total amount left with her. Okay, this is the total amount left with her. तो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट आ गया, अब क्वेश्चन में ही लेफ्ट आ गया, so what you will do? If that क्वेश्चन में ही लेफ्ट आ गया, that means बेटा it is simple subtraction. Don't get confused. अगर एडिशन होता तो क्वेश्चन में टोटल या फाइंड द सम ऑफ ऐसा कुछ होता है ना। So today we have done some word problem based on subtraction. Now tomorrow we will meet with some new concept. Okay? Till then, bye bye.